Okay, so yes, we are live now, and we should start our session. So hello, everyone. A very good afternoon. I am Dolat Beg, Comms Officer, PUAN USFP. I welcome you all in today's orientation session about PUAN's alumni small grants. As you all know, that USFP PUAN 8th round of alumni small grant is underway. And is open for new applications. And the deadline for the submitting the applications is 31st May 2023. Just to update you all, those participants who have missed our last orientation session, which was basically about the ASG and its main goals. And this is basically the second session in the series of 3 orientation sessions, which will be we are arranging for the prospective grantees. आज का basically ये session भी इसी हवाले से ही है, where our team will be, guiding you all about the various aspects of the alumni small grants application process, and will be guiding you and answer your queries. So let me basically introduce our speakers. We have with us Mr. Asan Gul, who is one of the faces behind our alumni portal, and is going to guide you all about the ways to get yourself registered on PUAN web portal and how to fill the online grant application forms. So I welcome Mr. Asan Gul. We have also with us Ms. Mushfat, who is basically looking after the financial aspects of the grants, the PUAN grants, ASG grants. She will be guiding you all about the various financial aspects and guide you about the various heads of the budgetary part of this grant. So before starting the session, I would basically, give you a brief overview of the, as usual, as we always give you a brief overview of the alumni small grant. As you know, the proposals are basically accepted, and it was basically opened on May 1st, and will be basically the last date of the deadlines of this 8th round of ASG grants is 31st May 2023. Proposals, please note it down. Proposals can only be submitted through online process. There are 2 major themes under this grants. One is the special theme, and the other one is the open themes. A request for budgets for the proposal addressing one of the special themes, which the details of the special themes will be available on the link, which will be providing you on this Facebook post. The budget limit for special themes cannot exceed 1 million. That's 10 lakh, and budget for the open themes are about 5 lakhs. It's 500,000. So maximum grant period is 4 months from the approval date. Of course, funds for approved or the successful proposal will be basically dispersed near the end of July. And project activities, please note it down that the project activities should not be planned before the start of August, and must not go beyond November 2023. To get the detailed information about ASG, we have, as I said, we have provided a link in the caption, which is PAK-US-alumni-network.org. So without further ado, I would like to request Mr. Asan to give you a presentation about the steps to get yourself registered on the alumni portal and how basically you can submit the online grant proposal. So over to you, Asan. Thank you, Dolat. Okay, so let's start with the presentation. Let me share my... You can share your screen. Can you see? Yeah, it's visible now. Okay.
So in our presentation today, we have basic steps for the online ASG application submission. So we have PUAN login, how to log into our PUAN.pk account, and then forgot password, how to sign up, and then we will have the alumni small grant steps. Okay, so when you open the pond.pk page, you will have this screen in front of you where you can put your email address and password, and then you can click and to log into the pond account. We have, if you don't remember your password, then you can always click on forgot password, and you can get your password and your email address. We have also signed up for new users. If you haven't logged into your PON account or didn't get any email from us, then you can always click on sign up for PON account. Okay, so when you click on forgot password and sign up buttons, let me share that screens with you. So for the forgot password, when you click on it, you just have to enter your registered email and then click on get login key. You will get your password in your email, registered email. Okay, and then we have sign up page. Sign up page is for those who are not registered in our system. If they try their login and they don't get login, they can always put your email here and click on sign up button. So it will send you a system generated email to your email address provided here with the information, with the login credentials and everything in a welcome email. So if the system says you are not registered, so you can click on the can't sign up link below the sign up button. And that's only for those who have completed their exchange programs before 2020 और उससे पहले जो है 2020 के बाद जो है उनको कांट साइन अप वाला रजिस्ट्रेशन पेज जो है ना वो कभी भी फिल नहीं करना चाहिए वो ऑटोमेटिकली हमारे पास उनका डेटा जो है ना उनके पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से आ जाता है और हम उसको ऑटोमेटिकली सिस्टम में ऐड करते हैं और वो ईमेल उनको चली जाती है कि आप रजिस्टर्ड हो गए ठीक है तो इसमें कोई मेरे ख्याल से आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ पे एरर्स आते हैं जब आप साइन अप पे क्लिक करते हैं कभी कभी आपको आ जाता है मल्टीपल ईमेल रजिस्टर्ड तो इस वजह से कि आपके ईमेल एड्रेस पे मल्टीपल अकाउंट्स हैं इन दैट केस यू जस्ट ईमेल ऑन info@pon.pk और हम उसका फिर रिप्लाई करते हैं और रिजॉल्व करते हैं आप लोगों के लिए ठीक है एंड देन you go to your account if you successfully log into pon.pk यहाँ पे आप लोग जब आ जाते हैं ये वेलकम स्क्रीन है आप लोगों के pon.pk अकाउंट पे ये pon का अकाउंट है उस पे क्या होता है कि यहाँ लेफ्ट साइड पे अगर आप लोग देखें तो अलुमनाई स्मॉल ग्रांट्स का एक लिंक नजर आ रहा है इस पे क्लिक करने से आप लोगों के पास अलुमनाई स्मॉल ग्रांट का एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है जिसके मल्टीपल स्टेप्स है उस एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट मुशफत टू प्लीज एक्सप्लेन दैट थैंक यू Thank you, Hassan. We have got the overview about alumni small grants and the login process. अब हम देखेंगे the steps through which we are going to apply our alumni small grant proposal. So there are 10 steps. हम one by one देखते हैं लेकिन पहले जब आपको ऐसा ने बताया आप लॉगिन होंगे और alumni small grant में जाएंगे फर्स्ट आपको ये जनरल alumni small grant introduction पेज नजर आएगा जिसमें ओवरव्यू जो भी आपको दिया गया है कि 2 टाइप्स की स्मॉल ग्रांट है ओपन स्पेशल थीम्स एंड देयर फंडिंग अमाउंट सारी डिटेल्स हैं वंस यू गो थ्रू इट
आपको पेज बॉटम पे ग्रांट जनरल गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट नजर आएगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो यू कैन फाइंड दिस टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि जिसमें आपको सारी प्रोजेक्ट छोटी छोटी टर्म्स बताई गई हैं कि जो कि आपको अलमनाई स्मॉल ग्रांट का प्रपोजल फिल करने में यूजफुल होंगी। एट द एंड आपको एक्नॉलेजमेंट को टिक करना पड़ेगा, यू अंडरस्टैंड दैट ऑल द जो आपने पॉइंट्स पढ़े हैं, एंड देन यू फॉर्मली स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस, जो कि एंड पे लिखा हुआ है अप्लाई। सो आफ्टर क्लिकिंग अप्लाई बटन, there are 10 steps. By going through these आप आपका प्रपोजल सबमिट हो सकता है। और आपको ये बात बता दें कि ये एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन इट्स नॉट अ वन गुड प्रोसेस। अगर आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, आप एक स्टेप करके 2-3 स्टेप्स करके ये इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, एंड देन यू कैन कंटिन्यू योर सेशन और फिर अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। So the number one step is update your personal information. ये आपका अगर अकाउंट बना हुआ है आपके अलमनाई डायरेक्टरी में, तो आपकी इंफॉर्मेशन वहां से ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी। बट इफ यू वांट टू अपडेट इट, आप इस पे जाके अपनी जनरल इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। सिमिलरली द सेकेंड स्टेप, योर एकेडमिक इंफॉर्मेशन, आपका जो एट द टाइम ऑफ योर प्रोग्राम जो आपकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन थी, अगर आप उसको उसके बाद इम्प्रूव हुई है या अपडेट हुई है, उसमें अपडेट कर देंगे एकेडमिक में। देन नंबर 3, योर वर्क इंफॉर्मेशन, यू हैव टू गो थ्रू योर you have to, if you want to update your work or professional information, you can do this. Then PUAN activities, project description, project key personnel, project work time, budget, and then upload information, upload your video. So for next slide, इसमें सबसे पहले ये 1 by 1 करके आपको सारी डिटेल्स स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। आपने अपनी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन कैसे अपडेट करनी है, इसमें आई डोंट थिंक सो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। फॉर द नेक्स्ट, योर एकेडमिक, इसमें भी आपको मेरे हाथ में बताने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली योर इंस्टीट्यूट, योर कंप्लीशन मंथ, देन योर वर्क इंफॉर्मेशन, एंड नंबर 4, द नेक्स्ट वन। अच्छा, for application process, you have to add here all the previous your activities. If you have done any grant, any activity with PUAN, you have to write it over here. इसमें आप अगर स्क्रीन पे देखें, आपको रेफरेंस नंबर, अगर आपने पहले कोई स्मॉल ग्रांट की है, उसका कैट नंबर, प्रोजेक्ट टाइटल क्या था, पहले आपको अमाउंट कितनी रिसीव हुई है, ये ऐड करेंगे। इसी तरह अगर आपने कोई स्मॉल कोई छोटी एक्टिविटी की है, चैप्टर एक्टिविटी और सिमिलर, वो भी आप ऐड करेंगे। ये सारा आपका एक प्रोफाइल बन जाएगा कि आपने इससे पहले PUAN में क्या क्या एक्टिविटीज की हैं। नेक्स्ट स्टेप, मैं यहाँ पे कुछ करना चाहता हूँ, प्लीज। ओके। सो यहाँ पे आप लोग इस चीज का ख्याल रखें कि अगर आप लोगों ने पहले कोई एक्टिविटीज की है और आप लोग अपने एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाए ना, और वहां पे वो चैप्टर एक्टिविटी आप लोगों की लिस्ट डाउन हो रही है, या आप लोगों ने कोई ASG किया हुआ है और वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो रहा है, चैप्टर जो आप लोगों की एप्लीकेशन हिस्ट्री है, एक्टिविटीज हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, तो वो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने वो एक्टिविटीज या वो स्मॉल ग्रांट्स डालने जो कि वहां पे लिस्ट डाउन नहीं हुए होते हैं, तो आप लोगों ने सिर्फ ये डालने हैं। दूसरी बात ये है कि जो वर्क इंफॉर्मेशन और अपडेट एकेडमिक इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आप लोगों ने जो लेटेस्ट अपलोड किए होते हैं वही नजर आ रहे हैं एडिट करने के लिए। तो अगर आप लोगों ने नई कोई एक्सपीरियंस या कुछ ऐड करना है और अपना फुल प्रोफाइल अपडेट करना है, तो ऑलवेज गो टू योर अकाउंट
जहां पे आप लोगों के पास यहाँ पे आ रहा है जैसे अपडेट प्रोफाइल, और इसमें इसी मेन पेज पे नीचे आप लोगों के एकेडमिक इंफॉर्मेशन, आप लोगों के वर्क इंफॉर्मेशन, उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो आप लोग अपने फुल प्रोफाइल को पहले सारा कंप्लीट कर ले, इसको यहाँ से अपडेट कर लें। जो बेसिक बाकी करंट जो चीजें, वो सिर्फ यहाँ से आप लोग, उसमें अगर कोई इशू है या चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। Mushfiq, please. Thank you. Thank you, Asil. So your technical part of proposal starts from project description. यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऐड करनी है. As Beek has talked about it कि दो टाइप की चीजें हैं, open and theme based. अगर आपका theme based project you are going to apply, so you have to select theme based from here from the project type. इसमें कुछ हमारे पास आइटम्स जो है वो ड्रॉप डाउन है, कुछ आपको राइट डाउन करने हैं. जैसे कि प्रोजेक्ट टाइप यू हैव टू, इट्स अ ड्रॉप डाउन, यू हैव टू सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर. सिमिलरली थीम्स आपको अवेलेबल होते हैं अपनी वेबसाइट पे, आपको थीम सेलेक्ट करने हैं. देन टारगेट रीजन्स, यू कैन ऐड योर सिटी हियर. अगर आपका प्रोजेक्ट मल्टीपल सिटीज में है, आप उसको कॉमा इंसर्ट करके डिफरेंट सिटीज पे लिख सकते हैं. इसी तरह प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, यू हैव टू राइट इन न्यूमेरिक फिगर हियर. ये आपको वीक्स में इन वीक्स लिखा हुआ है, ये आपको वीक्स लिखने कितने ड्यूरेशन का आपका प्रोजेक्ट है. और स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, इट्स अ कैलेंडर, यू हैव टू choose from the calendar the timings of your project. Similarly, number of beneficiaries, number of indirect beneficiaries, number of PUAN alumni, these are all numeric fields. So if we go down, we will see the next part of project description is executive summary, methodology, project goals and objectives. If you see ये एग्जेक्टिव समरी और प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन, इनके साथ साइंस ऐड है, प्लस साइन. अगर आपको समझ नहीं आ रहा आपने इसमें क्या लिखना चाह रहे हैं या इसके क्या डिमांड कर रहा है आपसे टाइटल, तो आप प्लस का साइन प्रेस करके इसमें आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपने क्या यहाँ पे मेथोडोलॉजी जैसे में लिखा है, प्लीज एक्सप्लेन द एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू प्लान टू एग्जीक्यूट फॉर दिस प्रोजेक्ट. सारी मेथोडोलॉजी आपने लिखनी है, ये आपके लिए हेल्पफुल है for the application process. Similarly, project goals, you have to write your project goals and objectives. Next, then objectives, deliverables, expected outcomes, media outreach plan, branding plan. It can be conventional, it can be online, or monitoring and evaluation, your sustainability एंड सिक्योरिटी नैरेटिव. अगर कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आपको सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है वो आप ऐड कर सकते हैं. और सैलरीज आप अपने प्रोजेक्ट्स में एप्लीकेशन प्रपोजल में आप सैलरीज आर नॉट अलाउड, आप किसी को सैलरी नहीं पे कर सकते. ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है. और अगर किसी इवेंट के लिए आपको सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे प्रोजेक्ट सिक्योरिटी नैरेटिव में. एंड नेक्स्ट, सिक्योरिटी नैरेटिव. So we have gone through the project description part. Next step is project key personnel. अच्छा, इसमें हमने project key personnel में point number 5, we have missed the one point, project activities. So in project activities आप अपने पूरे project में आपका एक project will be divided into several activities. आपने एक एक करके इसमें activity डालनी है. In title, you will add the title of the activity, the dates of the activity, then audience and action. You will add here your resource person, and if any security is required, you will going to add it over in the action items. इसी तरह next you can save and add more. आप इस तरह ढेर सारी activities add कर सकते हैं. अच्छा, इसी तरह इसमें add resource person, अगर आप इसको प्लस का बटन ऐड करेंगे ब्लू में आप देख रहे हैं एड रिसोर्स पर्सन, अगर आप इसको क्लिक करेंगे यू कैन सी आप यहाँ पे नंबर ऑफ नेम ऑफ स्पीकर, प्रेजेंटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, इन सब की डिटेल्स डाल सकते हैं. यू कैन इवन अपलोड देयर सीवीज हियर, देयर कंसेंट लेटर,
and down there you can see there are various names. This is the example. You can add various resource person here, and similarly you can add various security narratives here. ये सिक्योरिटी नैरेटिव का भी आपने देख लिया. यहाँ पे भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं. चूज फाइल. द अदर इफ you require more files, you can add it over here. You can save and add more. Next step. Project number 6. Step 6 में project partners. Project partners में you can add the organizations or any third party who is going to execute the project with you. ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो आपके साथ काम कर रही हो, और एनी थर्ड पार्टी. आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 500 कैरेक्टर्स है, ये आपने इस बॉक्स में ऐड करनी है. एंड कैरेक्टर इज इंक्लूड स्पेस, फुल स्टॉप, कॉमा. इट इज कैरेक्टर मीन्स के स्पेस भी उसमें आ रहा है. वर्ड और कैरेक्टर में डिफरेंस है, ये आप देखिएगा. जब आप टाइप करने लगेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बैकवर्ड काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा. देन नेक्स्ट अपलोड MOU. अगर आपका कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे. देयर कॉन्सेंट लेटर, इफ एनी NOC इज रिक्वायर्ड, यू विल अपलोड इट हियर. यू कैन सेव एंड ऐड मोर. इसी तरह अगर आपको की पर्सनल जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका collaboration है, उसकी अगर कोई की पर्सनल है, टीम मेंबर्स, स्पीकर्स, एनी ट्रेनर्स, you are going to add in key personnel. You will write the name, their information, their role, their exchange program, if any, and you can also upload the CV here. Save and add more करके आप furthermore भी add कर सकते हैं. Project partners and project number 7 step is project work plan. Here you are going to add details about weekly जो भी आप वीक बेसिस पे जो भी एक्टिविटीज करेंगे. वीक 1 में आपने ये जो आपने प्रीवियस सेक्शंस में देखा था प्रोजेक्ट एक्टिविटीज डाली थी. हो सकता है 3-4 एक्टिविटीज में से 2 आप वीक 1 में करें. नेक्स्ट वीक 2 में आपने जो एक्टिविटीज करनी है उनकी आप डिटेल्स इस सारे प्रोजेक्ट स्टेप 7 प्रोजेक्ट वर्क प्लान में देंगे. Then the next step is project budget. This is a very important part of submission of your proposal. Budget में आप सबसे पहले try करेंगे कि आपको एक realistic market value current prices से matching आप एक estimate बना सकें. उसमें आपका budget जो है ये आपका टेक्निकली टर्म्स में आपकी न्यूमेरिक जो आपने इससे पहले सारा प्लान किया, जो आपने नरेशंस लिखी, उनको आपने फाइनेंशियल फिगर्स देने बेसिकली. सो प्लीज मेक श्योर जो कि आपने एग्जीक्यूट किया, अपने एक्टिविटीज प्रीवियसली ऐड किए हैं उससे मैच करें ये आपकी फिगर्स जो भी आपके हेड्स हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि बजट कैटेगरी में वेन्यू है, फूड है, ट्रैवल है, सप्लाईज है. सो आप मेक श्योर करें कि कोई भी एक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको रेंट करना है किसी बिल्डिंग को, वो वेन्यू के हेड में आए. इसी तरह अगर आपने कोई उनकी फूड आइटम्स हैं, कोई रिफ्रेशमेंट है, वो आपके फूड के कैटेगरी में आए. Similarly, if you want to have, you are going to use any pens, any chart papers or something like this will come under supplies. इसी तरह कॉन्ट्रेक्चुअल आइटम्स, कोई भी आपने किसी ट्रेनर से, किसी अपने स्पीकर से कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल आइटम्स में आएंगे. कम्युनिकेशन, अकोमोडेशन, प्रिंटिंग एंड सो ऑन. आई वांट टू यहाँ पे थोड़ा फर्दर एम्फेसिस इस बात पे करूंगी. समटाइम्स ये होता है कि आपका प्रोजेक्ट बजट ज्यादा होता है और we have a limit 5 lakh and 10 lakh rupees. So अगर आपके पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, you can also add cost sharing here और in kind contribution भी आप ले सकते हैं. cost sharing ये है कि अगर आप किसी भी कोई आपके साथ कोई भी ट्रेनर, कोई भी alumni इसमें शेयर करा आपके साथ कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर 35,000 आपका रेंट था, 30,000 आप पे करें, 5,000 the other one is contributing with you. This is cost sharing. In kind contribution is something अगर आप किसी बिल्डिंग में जाके किसी का वेन्यू यूज करें and they are allowing it you for the free of cost,
दिस इज एग्जांपल ऑफ इन काइंड कंट्रीब्यूशन। आप ये सारी अपने एक्सपेंसेस, अपने कॉस्ट शेयरिंग, इन काइंड कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे और आपकी रिक्वेस्टेड अमाउंट लास्ट कॉलम में प्रेजेंट हो जाएगी। और ये था बजट। एंड वन मोर थिंग कि आप ये मेक श्योर कर लें कि जो भी रेलेवेंट बजट आइटम्स है वो हमारी हेड के अंडर आए। और वंस इफ योर प्रपोजल गॉट एक्सेप्टेड, तो प्लीज मेक श्योर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ये आप मूव ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 30,000 फॉर द वेन्यू था, आपका 20,000 में अगर काम हो गया तो नेक्स्ट 10,000 है, विदाउट एनी अप्रूवल यू कैन नॉट मूव इट इन अनदर हेड। For example, the remaining 10,000, if you want to spend on food, it is totally prohibited for ASGs. So next step is after project budget, we have we require project uploads. We require a video of 60 seconds. Asan can better explain you about the video of ASG submission. ओके, सो वीडियो सबमिशन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वीडियो का फॉर्मेट जो है ना वो .mp4 होना चाहिए, और उसके अलावा उसका साइज जो है ना वो मैक्सिमम जो है ना 5 MB तक होना चाहिए। अगर आप किसी और फॉर्मेट में, फॉर एग्जांपल MPG और इस तरह के फॉर्मेट्स में अपलोड करेंगे तो आपको हर टाइम एरर आएगा। तो ये सबसे ज़रूरी है कि उसका फॉर्मेट जो है वो .mp4 होना चाहिए, और उसका साइज जो है ना वो मैक्सिमम 5 MB होना चाहिए। तो आप लोगों कभी भी कोई वीडियो आप मोबाइल पे बनाते हैं, आई नो कि उसका साइज बहुत ज़्यादा होता है। ऑनलाइन बहुत सारे एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स हैं जिसपे आप उसको अपलोड करके कंप्रेस कर सकते हैं और अपना जो है ना उसको कम MB में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए .mp4 और 5 MB से लेस साइज उसका होना चाहिए वीडियो के लिए। मुशफक प्लीज। On last, you have to add your account details here. So in case अगर आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है, हमें आपकी बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन फॉर फंड ट्रांसफर चाहिए होती है। इसमें आप अकाउंट टाइटल, अच्छा, प्लीज मेक श्योर दैट द ग्रांटी शुड हैव देयर ओन बैंक अकाउंट। ऐसा नहीं है कि आप किसी फ्रेंड का दे दें या किसी और का दे दें। इट शुड बी ऑन योर ओन नेम। टाइप ऑफ अकाउंट, इट्स सेविंग, करंट और वट एवर। IBAN, प्लीज मेक श्योर आप अपना करेक्ट IBAN यहाँ पे एंटर करें। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक डिजिट भी अगर मिस हो तो वो फंड्स ट्रांसफर होने में बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं। और समटाइम्स ऐसा भी होता है इफ यू हैव मल्टीपल अकाउंट्स, कभी आप रैंडमली जल्दी में टाइटल अपना वही लिख लेते हैं और अकाउंट नंबर आप किसी और बैंक का लिख लेते हैं। ये फिर लेटर ऑन बहुत ट्रबल होती है, आपको भी फंड्स लेट मिलते हैं और हमारा भी पेपर वर्क बढ़ जाता है। एंड देन योर बैंक नेम, योर ब्रांच एड्रेस। So please make sure कि आप अपना IBAN and account details should be very clear और very बहुत एक्टिव होके आप ये इंफॉर्मेशन ऐड करें। Then you have to save these information। अच्छा, बाकी चीजें अगर इन केस ये हमारा जो कमेटी में जाता है, रिव्यू होता है प्रोजेक्ट की, आपको चीजें समरी जो भी आपने चीजें एडिटेबल होती हैं आपको यहाँ से टीम सेंड कर देती है, लेकिन बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन ये फिर एडिटेबल नहीं होती। इसी तरह आपकी जो इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन और एकेडमिक एंड वर्क इंफॉर्मेशन वो भी एडिटेबल नहीं होती। सो मेक श्योर यहाँ से जब एक दफा प्रपोजल के लिए आपकी चीजें सेंड करें और बैंक इंफॉर्मेशन स्पेशली, इसको आप अच्छी तरह व्यू करके और फिर सेव नेक्स्ट, सेव बैंक इंफॉर्मेशन का बटन प्रेस करें। एंड एट लास्ट आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस आपको एंड पे नजर आ रही होगी अंडरटेकिंग। यहाँ पे आपने अपने साइन अपलोड करने हैं और सबमिट प्रपोजल का बटन दबा देना है। साइन आपने कैसे अपलोड करने है ये ऐसा आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इस पेज पे ना 3 डिफरेंट चीजें हैं। फॉर एक है वीडियो, एक है बैंक इंफॉर्मेशन और एक आपकी फाइनल जो है अंडरटेकिंग है। तो ये अलग अलग आप लोगों की अपलोड होती है या सेव होती है। तो सबसे पहले आप लोग जो है इसमें से फॉर एग्जांपल वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं एंड देन क्लिक ऑन दिस अपलोड बटन।
सबमिट प्रपोजल पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अपलोड बटन पे क्लिक करना है। तो वो आपकी अलहदा जो है सिर्फ वीडियो अपलोड कर लेगा सिस्टम। एंड देन उसके बाद जो है ना, आप लोग अगर बैंक इंफॉर्मेशन सिर्फ ऐड करना चाहते हैं तो बैंक इंफॉर्मेशन सारी जो है वो सेव बैंक इन्फो बटन पे क्लिक कर लें, उसके बाद वो सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। और जो एंड पे है वो अंडरटेकिंग सब अपना सिग्नेचर जो है वो PNG, JPG या JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। उसमें आप उसको अपलोड कर ले, कोई PDF इस तरह के और फॉर्मेट्स में नहीं होना चाहिए। और उसको बड़े बिल्कुल बड़े पेज पे भी ना अपलोड करें, सिंपल एक पेज पे सिग्नेचर अपने कर लें और उसका तस्वीर ले और उसको छोटा क्रॉप करके सिर्फ सिग्नेचर का जो एरिया है ना वो सिर्फ अपलोड कर लें, ताकि आप लोगों के साइंस जो है वो पूरे एप्लीकेशन पे सही प्रॉपर फॉर्म में PDF में कन्वर्ट हो जाए। और जब ये सारी चीजें हो जाए उसके बाद आप लोग जो है सबमिट प्रपोजल पे क्लिक कर लें। और ये जितने भी स्टेप्स हैं, आप किसी भी स्टेप पे एप्लीकेशन को अगर छोड़ते हैं, जो प्रोजेक्ट के मेन स्टेप्स है वो आपके स्टार्ट होते हैं स्टेप 5 से, और उसके अनवर्ड स्टेप्स आपके इसी ASG के लिए हैं। जो बाकी फर्स्ट स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, 3 है, ये सारे जो है आपके प्रोफाइल से रिलेटेड है। स्टेप 4 भी जो है वो ASG का है, लेकिन जो आपका मेन स्टार्ट होता है वो स्टेप 5 से होता है। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आके बैठ गए, यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर एप्लीकेशन, आप अपडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं, इसको करते हैं, फिर उसके बाद अपडेट को करते हैं, एकेडमिक इंफॉर्मेशन को, फिर वर्क इंफॉर्मेशन को करते हैं, देन यू क्लोज योर लॉग आउट योर सिस्टम, और उसके बाद आप कहते हैं कि कल आके मैं कर लूंगा। द सिस्टम विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम अपडेट वर्क इंफॉर्मेशन, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1, और उसी में दोबारा अगर आपने और कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, जो लास्ट वाले हैं वो आपके सेव हो गए हैं, लेकिन सिस्टम विल स्टिल स्टार्ट फ्रॉम द स्टेप 1। उसमें वो सारे अगर चेंज नहीं करनी क्योंकि आपने लास्ट टाइम की है, जस्ट क्लिक ऑन अपडेट एंड मूव नेक्स्ट। इसी तरह स्टेप 2 पे भी, स्टेप 3 पे भी, स्टेप 4 पे भी। जो स्टेप नंबर 5 है उस पे आपका प्रोजेक्ट सारा स्टार्ट होता है, और उस पे ही आपका अलुमनाई स्मॉल ग्रांट का जो है ना एप्लीकेशन सेव होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप स्टेप 5 पे सेव करते हैं, फिर आप जब भी लॉग इन करेंगे सिस्टम को और अलुमनाई स्मॉल ग्रांट पे क्लिक करेंगे तो आप स्टेप 5 पे ही लैंड करेंगे। इसी तरह अगर आप स्टेप 6 पे चले गए, स्टेप 7 पे, स्टेप 8 पे, और आपने लॉग आउट किया, तो जब भी दोबारा आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्टेप नंबर 5, क्योंकि वो आपका मेन जो है ना स्टार्टिंग प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके अलावा अगर आप स्टेप 4 पे जाना चाहते हैं, या अगर आप 9 तक पहुंच गए, आप स्टेप 6 पे आना चाहते हैं, तो जस्ट ऊपर जो स्टेप 6 लिखा हुआ है, जिसके ऊपर टिक का निशान भी बना हुआ है, उसी पे आप लोग क्लिक करेंगे, उसी स्टेप पे आ जाएंगे। तो आपका जो उससे पहले वाला सारा डेटा होता है वो स्टोर होता है। यू जस्ट नीड टू एडिट समथिंग एंड जस्ट क्लिक ऑन अपडेट एंड मूव नेक्स्ट। तो इसी तरह आपके सारे स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाए एंड यू आर सेटिस्फाइड विद योर एप्लीकेशन, देन इन द फाइनल जस्ट क्लिक दिस अंडरटेकिंग, अपलोड योर सिग्नेचर, जो मैंने पहले आपको बताया कि किस तरह उसको सिग्नेचर्स को आप लोगों ने बनाना है और अपलोड करना है, एंड देन सबमिट प्रपोजल वाले बटन पे क्लिक करके आप लोगों का जो प्रपोजल है वो सबमिट हो जाता है। जो स्टेप नंबर 10 है उस पर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको हम बता रहे हैं कि आपका प्रपोजल जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया, और पूरा उसका प्रोसेस बताते हैं कि उसका रिव्यू होगा, एंड देन यू गाइस विल नो। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। I just want to add one thing here. बजट से रिलेटेड मैं एक दो पॉइंट्स बताना चाहूंगी। बेसिकली सैलरीज, आप अगर कोई स्पीकर और ट्रेनर हायर करें, यू कैन गिव सैलरीज टू देम, बट इफ दे आर अलमनाई यू कैन नॉट पे देम। नॉन अलमनाई कोई स्पीकर, कोई भी ट्रेनर होगा, आप उन्हें सैलरी पे कर सकते हैं एज पर देयर रोल, एंड ग्रांटी कैन गेट सैलरी टू। ये एक पॉइंट था जो कि ऑफनली क्वेश्चनेबल होता है। थैंक यू। ओके,
So thank you, Ehsan and Mushfit. बड़ी डिटेल में आपने brief किया about the application process and the financial aspects. So basically we have got few questions here. जिसको एक तो ये कि हम लाइव ही आंसर भी कर रहे हैं फेसबुक पे, और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब हमारे दोनों स्पीकर्स ने दिए हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे which we would like to take here and answer them. There is a question again here about if anyone has forgot their password. तो इस हवाले से ये कि आपने जैसा एहसन ने आपको कहा है कि आपने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, और जिसके बाद आपको एक लिंक रिसीव होगी, और समटाइम्स वो जो लिंक है वो आपके जंक ईमेल में भी जा सकता है, राइट एहसन? Yes, yes. सो उसको आपने इसके हवाले से अगर आप मजीद कुछ कहना ऐड करना चाहें एहसन? जी जी। जो आप लोग फॉरगेट पासवर्ड पे या कोई भी हमारे सिस्टम जनरेटेड ईमेल्स होते हैं, वो जो है आप लोगों के जंक या स्पैम में जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब किसी बटन पे क्लिक करते हैं और उसका बैकएंड पे आप लोगों को कोई सिस्टम जनरेटेड ईमेल आती है PUAN.pk से, तो वो आप लोगों के जंक फोल्डर और स्पैम में चेक कर लिया करें, ठीक है। तो या तो डायरेक्ट इनबॉक्स में आ जाएगी, और अगर जंक में एक दफा फर्स्ट टाइम आप लोगों के पास आ भी गई, तो उसको ओपन करके उस ईमेल को मूव टू इनबॉक्स कर दे, या उसको नॉट स्पैम करके आप लोग इनबॉक्स में कर सकते हैं। तो उसके बाद जो भी ईमेल्स आप लोगों को आएगी वो मोस्टली आप लोगों के इनबॉक्स में लैंड करेगी। सो यही मैं साथ में ऐड करना चाहता था। थैंक यू। Thank you, Ehsan. Thank you. Again, there is question about the deadline, जो कि हम बता चुके हैं, और जिन लोगों ने इस सेशन को लेट ज्वाइन किया है तो उनके लिए बताते चलो कि ये जो रिकॉर्डिंग हमारे इस सेशन का है वो हमारे फेसबुक पे और हमारे यूट्यूब जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पे अवेलेबल होगा। और डेडलाइन जो हमारी इस एप्लीकेशन जो ग्रांट एप्लीकेशन की सबमिशन का है वो 31 मई है। There is another question about the maximum fund limit, which is basically 1 million for the special themes and 5.5 million या 5 lakh जो हमारी open themes है उसके लिए। And basically open themes और special themes के हवाले से जो डिटेल है वो आपको जो कैप्शन में लिंक हमने प्रोवाइड की है, which is PAK-US Alumni Network.org. तो उस पे अवेलेबल है सारी चीज़ें, वहाँ पे लिस्ट डाउन किया गया है कि स्पेशल थीम्स में कौन कौन से थीम्स है, और ओपन थीम्स तो आप कोई भी किसी भी थीम्स को आप पिच कर सकते हैं। तो फॉर स्पेशल थीम्स मैक्सिमम बजट जो है वो 1 मिलियन है, और ओपन थीम्स के लिए 0.5 मिलियन। रिगार्डिंग द वीडियो फॉर्मेट, एहसन ने आपको डिटेल में बताया कि इट शुड बी इन MP4 फॉर्मेट, और विच शुड नॉट बी उसका जो लेंथ है वो 60 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसकी वीडियो की साइज़ है वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप किसी भी गैजेट से ये कर सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल टूल्स की ज़रूरत नहीं है, लाइक आप अपने मोबाइल से उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड फॉर दैट वी हैव मिस्टर वकार विद अस। वकार साहब है हमारे साथ, जो कि मैनेज करते हैं हमारे अलुमनाई आउटरीच को। तो उनसे मैं ये सवाल उनके सामने रखना चाहूँगा। एक क्वेश्चन है कि कैन वी इंक्लूड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स in our proposal, grant proposal? So वकार साहब, आप इसको आंसर करना चाहेंगे? Yes, thank you, Daulat Beg. Not just a construction material, but any material, any item that has a life more than the project life itself is not allowed. So the first quick question answer is no. That will also include you cannot buy furniture or electronic equipment, laptops, cameras, generators, build buildings, build schools. You are also not allowed to make donations. Somebody wants to buy lots of book and give to their village school. Unfortunately, this is not the funding avenue for that kind of purpose. You are also not allowed to give cash prices. People have some projects where there is some competition, and at the end, first, second, third prizes in cash. So cash prices are not allowed.
So basically, you need to spend your money on project activities itself, on consumables. You can buy all the things that are required during the project that will be used during the project. You can spend money on travel, you can spend money on food, you can spend money on accommodation, again, only during the duration of the project. Thank you, Gaurav. थैंक यू वकास साहब। मेरे ख्याल से यहाँ पे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग किसको आप चार्ज कर सकते हैं, लाइक वी कैन वी एलोकेट सम फंड फॉर आवरसेल्फ, जो कि वकार साहब ने बड़ी बड़ी क्लियरली कहा है कि आप किसी एक्सपर्ट्स के लिए आप एलोकेट कर सकते हो बट नॉट फॉर योरसेल्फ। और इसके अलावा और क्वेश्चंस है यहाँ पे अबाउट द डेडलाइन विच इज़ 31st May, submit for soon. Please things also. Okay, again, there's a question about the special themes. Special themes के हवाले से आपको बताते चलें कि ये जो लिंक हमने प्रोवाइड की है PAK-U.S alumni network.org, यहाँ पे ये अवेलेबल है। आप यहाँ पे इस लिंक को विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन के हवाले से, गाइडलाइंस के हवाले से मज़ीद तफसीलन आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा मेरे ख्याल से और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने अपने फर्स्ट, एंड जस्ट टू रिमाइंड यू दैट वी हैड अ सेशन जो कि हमारा पहले सेशन था अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड अबाउट द गोल्स एंड अबाउट वेरियस अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट ASG, जो कि हमने लास्ट वीक आप लोगों के लिए हमने तरतीब दी थी, जो कि अवेलेबल है, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है हमारे यूट्यूब पेज पे और हमारे फेसबुक पेज पे, उसको भी ज़रूर विजिट करें। वहाँ पे आपको बहुत सारे इसके आंसर्स मिलेंगे, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस सवालात किए गए थे जिसके आंसर हमारे एक्सपर्ट जो पैनलिस्ट थे उन्होंने उसके आंसर किए थे। इसी तरह नेक्स्ट वीक ऑन 26th May हम आपके लिए एक और सेशन वी आर गोइंग टू बेसिकली अरेंज अनदर सेशन फॉर यू ऑल, जो कि हमारे प्रीवियस ग्रांटीज है, जो सक्सेसफुल ग्रांटीज थे, उनके साथ हम रखेंगे। वो आपके साथ दे विल बी बेसिकली शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस विद यू ऑल। उससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कि किस तरह आपने अपने इस प्रोजेक्ट्स को, अपने एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना है, अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना है। इस हवाले से नेक्स्ट वीक इसको लाजमी आप अटेंड करें, नेक्स्ट वीक के जो हमारे सेशन है विच इज़ ऑन 26th May। सो मेरे ख्याल से बहुत सारे हमने क्वेश्चंस आंसर किए हैं। जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल ऑफ द अगेन, आपको जो है ना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो रिमाइंड करते चलूँ कि अपने एप्लीकेशंस को स्टार्ट करते हुए, यानी एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले यू मस्ट गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन PUAN पोर्टल, वो लाजमी है। और इसके अलावा जो जंक ईमेल की बात की ऐसा नहीं कि जब आप फॉरगेट, अगर किसी को याद नहीं है अपने पासवर्ड, तो फॉरगेट पासवर्ड जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो डू विजिट योर जंक ईमेल। ये हो गए मेरे ख्याल से सारी चीज़ें कवर हो गए इसमें। नेक्स्ट वीक हमारे जो सेशन को है उसको मिस ना कर लीजिएगा, उसमें 26 मई को ज्वाइन करें, उस पर आपको बहुत सारे नए इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। और साथ ही साथ आज के जो हमारे जो रिकॉर्डिंग है वो भी अवेलेबल होगा कुछ देर में फेसबुक पे। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस इन द नेक्स्ट सेशन। So I would like to thank Ahsan, Mushfat and Waqas Saab and you all for joining us in this session. So for next till then, goodbye. Khuda Hafiz.